क्वेश्चन क्या है अपना, 2 वायर्स A and B are carrying current I1 and I2 as shown in the figure. The separation between them is D. दोनों वायर के बीच में सेपरेशन D है. A third wire C carrying a current I is kept parallel to them at a distance x from A such that the net force acting on it is 0. द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आ रहा है अपन से, बेसिकली पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है मेरे से, ठीक है. और ऐसे बोला है कि उसका डिस्टेंस ए से जो है, ए वाला वायर से उससे एक्स होगा, ठीक है. तो सी पैरेलल रखा गया है, मतलब कुछ ऐसा सा सी रखा गया है, लेकिन इस वाले केस में तो उस पर फोर्स जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि देखो फोर्स मेरा क्या है, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी. दैट मीन्स इसमें मतलब कोई और जीरो नहीं हो सकता, मुझे बी जो है वो जीरो करवाना पड़ेगा, है ना, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है. लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ठीक है, इसका डिस्टेंस एडजस्ट करते हैं, लेकिन इस जो अपना ये वाला केस है, इस वाले केस में जीरो नहीं आ रहा. तो मतलब एक केस अपन ये लेंगे कि इधर रख दें वायर सी को, एक ही लेंगे कि इसको इधर रख दें, ठीक है. तो इसको मैं फर्स्ट केस बोल रही हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेकेंड केस बोल रही हूँ, ठीक है. तो फॉर फर्स्ट केस द वैल्यू ऑफ एक्स है ना, फॉर फर्स्ट केस में जीरो हो सकती है, क्योंकि इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है. फॉर फर्स्ट केस अपन डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. तो देखो इसकी वजह से, ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नोट I1, और ए से डिस्टेंस में से कितना होगा, एक्स डिस्टेंस होगा, है ना. और जो बी की वजह से होगा, अब मुझे फील्ड जीरो करना है तो मैं डिस्टेंस कैसे ना कैसे एडजस्ट करूंगी, तो ये दोनों इक्वल करना है मेरे को, ठीक है. अब मुझे डिस्टेंस ये कितना बोला है, ये टोटल डिस्टेंस डी है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसका वो एक्स है, तो इसका जो बी का डिस्टेंस है सी से वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस डी. तो यहाँ पे मैं म्यू नोट I2 बाई 2 पाई एक्स प्लस डी, ठीक है. अब ये इससे म्यू नोट बाई 2 पाई, म्यू नोट बाई 2 पाई कैंसिल, I1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू I2 बाई एक्स प्लस डी, है ना. तो ये हो जाएगा I1x प्लस I1d इज इक्वल्स टू I2x. तो I1d इज इक्वल्स टू I2x माइनस I1x, दैट इज x कॉमन ले लेती हूँ, I2 माइनस I1. तो यहाँ पे जो मेरा x का वैल्यू है वो कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू I1d बाई I2 माइनस I1. ये मेरा फर्स्ट केस में गया. सेकंड केस का है कि राइट साइड ऑफ बी, ठीक है. सो सेकंड केस अपना देख लेते हैं. सेकंड केस में पहले डिस्टेंस देख लेते हैं. इसमें इसने बोला है कि ए का डिस्टेंस सी से हमेशा एक्स ही होगा, ठीक है, एक्स मान लिया. और तो बाद में बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल ये वाला एक्स है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्स है और इतना डी है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, एक्स माइनस डी, ठीक है. तो ये हो जाएगा म्यू नोट I1 बाई 2 पाई एक्स इज इक्वल्स टू म्यू नोट I2 बाई 2 पाई एक्स माइनस डी. तो यहाँ पे म्यू नोट बाई 2 पाई, म्यू नोट बाई 2 पाई कैंसिल, I1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू I2 बाई एक्स माइनस डी, क्रॉस मल्टीप्लाइंग. सो एक्स I1 माइनस डी I1 इज इक्वल्स टू I2 एक्स, है ना. तो अब इसको इधर ले आते हैं, तो x I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू डी I1. तो बेसिकली जो x का वैल्यू है दैट इज I1 अपॉन I1 माइनस I2
into D. मेरा x का वैल्यू क्या क्या आ गया दोनों केसेस से? एक से आया मेरा I1 अपॉन I1 माइनस I2 D, ठीक है। और जो दूसरा आया है मेरा x का वैल्यू, दैट इज I1 कोमा I1 अपॉन I2 माइनस I1, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन जो अपना बी है ना। I1 प्लस माइनस का साइन चेंज करेंगे तो एक तो मतलब प्लस रखेंगे तो I1 माइनस I2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो अपना नीचे I2 माइनस I1 बन जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello students, now we are going to see this question. The question says that a circular coil having n turns, okay, and radius r carries a current of I, okay, is held in the xz plane and the magnetic field is Bi cap, okay. The torque on the coil due to the magnetic field is, okay, so we need to find the torque. So firstly what we'll do, we will draw the x, y and z axes so that you can understand more clearly, okay. So in drawing the x, y and z axes, what we'll have basically, let's suppose this is the x, y and z axis, okay, and there is a coil on it, okay. So basically the coil is on xz plane, so it will be somewhat like this. Okay, the coil will be somewhat like this. So since the coil is placed like this, that means the magnetic moment and the area vector will be in which direction? The area magnetic moment direction, the direction of magnetic moment basically, direction of magnetic moment is basically what? Perpendicular to the surface, means perpendicular to the plane is perpendicular to the plane, okay. This means what? That magnetic moment will be in this direction, okay, magnetic moment vector, okay. And basically the this is I cap, basically I am writing also over here that this is I cap minus I cap, J cap minus J cap, K cap and minus K cap. Okay, so you can easily see this is the only xz plane, okay. And if you see in the question, it is clearly given that magnetic field is basically what? Bi cap. So magnetic field vector is in this direction, okay. So we got the angle between the magnetic moment and magnetic field as 90 degree, okay. So now what we have to do, we have to find the torque, okay. So it's quite easy. Torque is basically tau, okay, and basically it's given by m cross b, okay, m vector cross b vector, which can be written as mb sine theta, okay, where m is the magnetic moment basically and b is the magnetic field, okay. So over here the and theta is basically the angle between a magnetic moment and magnetic field. So this is the magnetic field vector, okay. So what is the angle between magnetic field and magnetic moment over here? You can see it's 90 degree, so it will be mb into sine 90 degree. So sine 90 degree is basically 1, so it will be m into b. So now we can also write it. Now we also know one thing, that magnetic moment is basically equal to n into I into a, where n is the number of turns, I is the current passing through the loop, and basically a is the area. So what we are going to write over here, so tau can come out as n into I into a into b, okay. So basically n number of loops over here in the question is 1, okay. I in the loop is basically given as number of turns is n, not 1, okay, sorry. And I in the current loop is given I, okay, current in the loop is given I. So number of turns I have written wrong, so it is n, and basically the current is I, and area is not given, there is given the radius is r, okay. So if radius is r, what will be the area of this loop? Area will be equal to pi into r square, okay. So basically we'll write the area pi into r square into b, okay. So what will we get over here? We are gonna get the answer, that is ni pi r square b, okay. So this is basically our answer. So we need to check which option is correct. So basically
n into I into pi r square b. Okay, so option number A is absolutely correct. So option number A is our answer. Thank you. Hello everyone, two coaxial solenoid of different radius carry current I in the same direction. F1V the magnetic force on the inner solenoid due to the outer one, and F2V the magnetic force on the outer solenoid due to the inner one. Then you have to check out of ABCD which option is the correct one. So if I draw the two solenoid, let's say this is the outer solenoid, like this, and inside it there is a inner solenoid like this. In both of them the current is I, and F1 and F2 are the magnetic forces on the two because of the another one. So if I draw the diagram, so if you see, let's say this is the inner solenoid, and this is the outer solenoid. So we know that the magnetic field direction will be along the axis like this for because of the two. So let's say it is outward. So if you see here, the magnetic field is outward and the current is flowing like, if you see, it will be flowing like this, and if you curl the finger in the direction of current, you will get the magnetic field outward because of the two, right? Now we know that the magnetic force is equals to I L cross B. So if you do the L cross B, L cross B, L cross B, so it will be for any small element. If you take the small element, it will be like this, df. So in this sense, it will be radially outward, right? The force will be radially outward, evenly distributed, like this. So you can see the force is radially outward and evenly distributed. So if you take any point, the radially outward, the diametrically opposite point will be there, and the two will be having experiencing equal forces. For example, let's say you took point A, this is the point B. So point A and point B, they both will be experiencing the equal and opposite forces, like this. In the same way, if you take any another point, there will be a diametrically opposite point. So radial force evenly distributed. So if you see here, the net force, if you write down the net force on the two, if you do the same for the outer one also, here also you will do the same thing, right? Radially outward will be the forces, and diametrically opposite point will be experiencing the same force. So here also I will write down this from the symmetry, right? Diametrically opposite point is properly cancelling out the force, so it will be F1 equals to F2 equals to 0. So D is the correct. Thank you.